guys, what's up you all? Welcome back to my channel and you're watching me, Tanuja. And as you guys can see, आज हम पूरा एक festive mode में सजे धजे हैं because I'm doing a festive hairstyles video and I am going to be showing you guys some of my favorite hairstyles that I actually do in like practical life. I haven't I do see a lot of videos on Pinterest, वो fancy juda and everything else, but I know for a fact that you need a lot of practice and precision to do those hairstyles. So I've come up with like super easy hairstyles जो बहुत सुंदर लगते हैं, like your regular festive looks, especially अब दिवाली आने वाली है. So हम बहुत ज्यादा wedding functions and itself दिवाली वाले दिन बहुत अच्छे से तैयार होंगे and I'm super duper like digging my look today, like these long earrings, these curls and just hold this dupatta and everything else. I'm just loving my look so much. So if you're interested in watching how to in fact get this hairstyle and other hairstyles as well, then please continue watching this video, and without any further ado, let's get started. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Okay, so starting off with the first hairstyle, and I think a lot of people, like I don't see many people doing it, but this is like very simple and looks super chic, super classic, super duper nice. So what you have to do is either middle part your hair or side part your hair, like literally whatever suits your face type or whatever you like. I personally like side part more on my hair, and you have to take a straightener. I think a hair straightener is a sort of a must hairstyling tool in your vanity. Like you don't need a curler, you can definitely curl your hair with a straightener as well, but a straightener is something that I would highly recommend you guys to get. This one is from Philips. It's 4 to 5 years old and I've been exploiting it ever since. So this has been holding super good. So all you have to do is just like properly straight your hair, so that they are just like super straight and super like well kempt. I straightened my hair yesterday, so that's why my hair don't need a lot of work to be done. Now once you're done with that and your hair is like super straight, just comb them once so that you don't have like any sort of tangled hair. And then just put your hair behind your ear. Just make sure that your hair is super sleek and like nicely done. I have a lot of baby hairs as well, so sometimes what I like to do is that I have this hair wax, so usko main use karke I set my hair, but they have like fallen into place nicely. So yeah man, that's it. I personally think like this hairstyle, it's a classic one, okay? It just looks so pretty. Like simple suit, sari, har cheez ke saath ye bahut zyada sundar lagta hai. Moving on for the next hairstyle, I have been doing this hairstyle since I was like in 9th grade. Like I love doing this one, which is like twisted front sections. These are not like braids, but basically you just twist your hair. So I am perfectly fine with the side part only. You can do this with the middle part as well. So what I'm gonna do is that I'm gonna be picking like one section, okay, like that. As you guys can see, I've picked up like a single section and I'm gonna be twisting it up like that, okay? So I'm gonna twist it like very nicely, like a thin twist. Then I'm gonna grab another section of my hair, can you guys see another section, and I'm going to put it over it and twist it along. Now I think it's like visible. I've never done hairstyle videos, so I'm a little bit nervous. Then I'm gonna take the third section and again I'm gonna wrap it up over it again, and piche se make sure that your hair is like smoothen it out. Don't make it a messy business. I'm gonna secure it with the help of a bobby pin like that. So typical jaise hum karte hain one, and I like to do the cross thing. So I'll just put it over it so that it's nice and secured. And ये भी बहुत सुंदर लगता है, especially I love my left profile, so it really suits me. And additionally, if you guys want to take this hairstyle थोड़ा सा और आगे, all you have to do is repeat the same step on this side as well. So again you have to take like a single like sort of this sort of a portion of your hair. So that is the hairstyle complete. It is super clean, super nice, and gives like a very nice sort of a structure to your face. If you have like really long hair, then you can also curl your hair bottom से, वो भी बहुत ज़्यादा pretty लगेगा.
to the next hairstyle. We're gonna do some, improvisation to this existing hairstyle. The front part looks amazing already, and what I've done is that I've just pulled out these little, थोड़े से बिल्कुल हल्के से बाल, just to add a little something to the whole look. And we're gonna do a juda. So nothing much, nothing crazy with the juda thing. All I'm gonna do is that मैं अपने बाल अच्छे से लूँगी and I'm gonna just hold them properly. Hold my hair like that and I'm gonna just twist my hair, okay, जितने होते हैं, and with the help of a rubber band I'm going to secure it. This is the juda currently, that's how this one looks. And because the juda looks messy and we want to cover it up, I'm going to be using गेंदे के फूल. I think गेंदे के फूल are just so underrated. लोग बालों में गजरा लगाते हैं, गुलाब लगाते हैं, but गेंदे के फूल, oh my god, the whole festive vibe इतनी सुंदर लगती है. So what I'm gonna do is that मैंने इनको उसी size में कर लिया है. So I'm gonna be using like these bobby pins to secure this whole gajra sort of a thing. So this is how the gajra looks from like सामने से and side से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. So मेरे छोटे बाल है तो मेरे थोड़े बहुत बाल इधर उधर निकल रहे हैं, which is like fine. But if you guys have long hairs तो make like a proper juda and उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा. I think like गेंदे के फूल have something so much very festive in them that they just look so pretty. Now this next hairstyle looks very technical, but I don't think that it is that technical. Again, I started doing this hairstyle when I was in school. Back then मैं बहुत मेहनत करती थी अपने hairstyles पे. Now तो I'm like a lazy person. So let's get started. बहुत ज़्यादा easy hairstyle है. TV में आपने काफ़ी देखा होगा लोगों को. So we're gonna start with a middle parting. Okay. What you have to do is that just comb your hair एक बारी, and then अपने ears के level पे somewhat hair आप देख लो, and you have to just take a portion of hair like that, okay, can you guys can see, and just आगे के बाल ऐसे करके wrap कर दो ताकि ये आगे ही रहे, and then you have to repeat the similar procedure this side as well. Okay, now all you have to do is जो आपके पीछे के बाल हैं इनको पीछे को कोम करना है आपको, लाइक आपके जो बाल ऐसे इस साइड को फॉल करना है, आपको पीछे लेके जाने हैं हल्के से, ओके, हल्का इनको जस्ट ऐसे कोम कर दो. एंड द मोमेंट यू फील कि आपके बाल ऐसे पीछे हो गए हैं, यू आर गोइंग टू टेक अ रबर बैंड एंड जस्ट सिक्योर योर हेयर प्रॉपरली ताकि ये बीच में ना आए. तो एज सिंपल एज इट गेट्स. ये जो आपके बाल हैं आप इनको 3 पोर्शंस में डिवाइड करोगे. सो आई एम गोना टेक द फ्रंट पोर्शन. सबसे पहले ऊपर का ऐसे एक स्क्वायर टाइप का पोर्शन बन जाएगा. वंस यू हैव दिस पोर्शन जस्ट एक बारी कोम कर लो अच्छे से सो दैट इट्स क्लियर, एंड देन वेरी नाइसली जस्ट ट्विस्ट इट अप वेरी प्रॉपरली. ऐसे कंप्लीटली ट्विस्ट करके जस्ट अटैच अ बॉबी पिन हेयर. Yeah, I think you should be good to go with this one. Next up, with your remaining hair, again you want to take like one portion of your hair, and then you will take the second section of your hair. Again इसको twist करना है. मैं एक नया यूज कर रही हूँ. That's it. And जो आपके बाल बच रखे हैं आप उसका भी एक सेक्शन बना लो. And our last hair. So if you look closely, हमारे पास ऐसे 3 sort of twisted pieces हैं, and I'm going to repeat the same process this side as well. So I'll see you guys after a little time lapse. So I just opened up my hair and that's how the final result looks. But I think Indian looks के साथ ये बहुत सुंदर लगेगा, especially if you're wearing like a मांग टीका इसके साथ. It's gonna look super pretty, and that's the finished look.
we are back with a side part situation and this is like the very most last minute hairstyle जो मैंने अपने बहुत सारे cousins पे करा है. Literally on weddings when someone comes to you and they're like दीदी बाल बना दो and I'm like what do I even make? So this is the hairstyle that I really like going for and इसमें भी you know बहुत ऐसे चुटकी टाइप बना के ऐसे I've like just picked one layer of hair and ये हो गया. तो इसको भी मैं अब ट्विस्ट करके क्लीन सा एक ट्विस्ट करके मैं इसको बिल्कुल एक साफ तरीके से यहाँ एक ऊपर की साइड को बिल्कुल स्ट्रेट गोइंग टू बॉबी पिन दिस वन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ये एक लेयर आपकी लग गई. सेकेंडली बिल्कुल उसके नीचे से एक पतली लेयर लेनी है. अगेन बहुत मोटी लेयर नहीं लेनी. एंड सिमिलरली आपका ट्विस्ट टाइट होना चाहिए इसमें बिकॉज यू वांट पीपल टू सी लाइक ये लाइंस बन रही है ना ये हम दिखाएंगे इसमें. एंड पीछे जाके जो मैंने पहले बॉबी पिन लगाया था उसको निकालूंगी एंड मैं उसी के अंदर दोबारा ये वाले बॉबी पिन लगा दूंगी सो दैट हमारे पास कोई 50 बॉबी पिन ना हो जाए. अगेन मैं एक पतला सा एक और हेयर स्टैंड लूँगी एंड अच्छे से उसको ट्विस्ट करेंगे. इसमें बाल कम लगे मुझे तो मैं और ले लूँगी. आई एम गोइंग टू सिक्योर दिस वन. You guys can see एक तो आपके फेस को बहुत ज़्यादा लिफ्टेड इफेक्ट देते हैं बिकॉज आपने सारी चीज़ एकदम से पीछे ले गए एंड आप इसमें एक साइड बाल रख सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन यू नो लाइक जस्ट ऐसे भी लेके आ सकते हो. सो दे आर गोना लुक सुपर नाइस. This point of time my hair is like छोड़ दे बहन जी ले रहे थे but you gotta do what you gotta do. So this one hairstyle is like my super favorite, super quick. I think घर की किसी नॉर्मल सी पूजा हो या you know like a running errands type of a thing ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. So what you have to do इस look के लिए you will be needing a clutcher और यू नो क्लॉ वाले जो क्लचर्स आते हैं आजकल लंबे वाले आप वो यूज़ कर सकते हो. व्हाट यू हैव टू इज़ दैट बहुत रैंडमली यू नो लाइक जो अनकेम्प्ड लुक होता है आप अपने बाल ऐसे उंगलियां डाल के जस्ट पीछे लेके जाओ. ओके डूड जस्ट होल्ड देम लाइक दिस एंड आगे से ना जस्ट रैंडमली जस्ट स्टार्ट पिकिंग योर हेयर आउट. ओके हल्का हल्का से निकाल सकते हो आप एक मेजर सी चंक जैसे मैंने इधर निकाल ली है. पीछे के जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट गैदरिंग देम अप. जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बार बार उंगलियां ऐसे डाल रहे हो टू गिव दैट यू नो टेक्सचर टू योर हेयर. ओके दैट्स इट एंड आई एम गोइंग टू जस्ट ट्विस्ट माई हेयर लाइक दैट. ओके ये मैंने ट्विस्ट कर लिया अपने बाल एज यू गाइस कैन सी एंड देन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ क्लचर एंड मैं ऐसे करके अपने बाल बीच से मैं आई एम गोना मेक श्योर कि ये अच्छे से यू नो क्लचर ऐसे लग गया है. एंड देन आगे से आई एम गोइंग टू जस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ ढीला ढीला ऐसे कर दूँगी मैं. सो जो ये मेरे बाल नीचे के हल्के से ढीले बचे हैं आई एम गोइंग टू जस्ट टेक बॉबी पिन लाइक दैट एंड हियर यू गो. मैं हल्का सा इसको सिक्योर कर दूंगी ताकि मेरे बाल नीचे से भी ना निकले एंड दैट इज इट. आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज दैट आप अपने ये आगे वाले बाल जो है ना इनको कर्ल अप कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट डू दैट एज वेल. सो आई एम गोना ट्राई डूइंग दिस विद अ स्ट्रेटनर. आई हैव अ रोलर एज वेल. सो ये इससे नहीं ये तो मैं उससे करूँगी. सो आई एम जस्ट यू नो टेकिंग माई फ्रंट सेक्शन एंड मैं अपने बाल इसमें रोल करते हुए नीचे आ रही हूँ. इट्स अ वेरी यू नो वाओ मैन आई लाइक इट. आई रियली लाइक इट. ये अच्छे लग रहे हैं. सो इधर से भी ट्राई कर लेती हूँ दैट एंड oh wow man I look pretty. I think I want to curl more pieces of hair.
Okay guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching this video. If you made it till here, thank you so much. And if you enjoyed watching, don't forget to like this video, subscribe to my channel, turn on your bell notifications so that you never forget whenever I upload a new video. And I'll see you guys next time in my next video. Tab tak ke liye bye bye, ta ta and namaste.